Class B power amplifier. In this session, we are discussing Class B power amplifier. So what is the meaning of Class B power amplifier? So it is an amplifier in which the transistor bias and the amplitude of the input signal are such that the output current flows only for half cycle of the input signal. So क्लास बी पावर एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जहां पे जो आउटपुट है वो हमें सिर्फ 180 डिग्री पे ही मिलता है। मींस जो भी हम लोग इनपुट सिग्नल देंगे, फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग द इनपुट सिग्नल, सो दिस इज अ वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल है इनपुट सिग्नल की, जिसको अगर हम लोग डिग्रीज में मेजर करेंगे तो 360 डिग्री, हाफ साइकिल इज 180 डिग्री। रेडियन में मेजर करेंगे तो पाई रेडियन मीन्स हाफ साइकिल, 2 पाई मीन्स वन कंप्लीट साइकिल। सो ये जब इनपुट सिग्नल हम एक एम्पलीफायर को देंगे, यहां पे V in इंडिकेट्स इनपुट, V0 इंडिकेट्स आउटपुट। सो ये इनपुट सिग्नल जब हम इस एम्पलीफायर में देंगे, मीन्स क्लास B पावर एम्पलीफायर को देंगे, तो आउटपुट में हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल ही मिलेगा। हो सकता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल भी मिले। मींस हम लोग आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल या फिर आइदर नेगेटिव साइकिल। सो दिस कैन बी ऑल्सो आउटपुट, मीन्स वी विल गेट द आउटपुट फॉर वन हाफ साइकिल ओनली। सो वन हाफ साइकिल मीन्स आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल or either negative half cycle. So both the half cycles are of 180 degree only, and combining both we get a one complete 360 degree cycle. So in class B power amplifier, the output current flows only for half cycle, and that half cycle can be a positive half cycle or it can be a negative half cycle depending upon the transistor biasing. So once again I will repeat. So a class B power amplifier is an amplifier in which the transistor bias and the amplitude of the input signals are such that the output current flows only for one half cycle of the input. Means this is input, this is output, only for one half cycle only we will get the output. So half cycle में ही हमें आउटपुट मिलेगा। वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट मिल सकता है या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आउटपुट मिल सकता है। Means we are getting 180 degree conduction either from 0 to 180 degree or from 180 degree to 360 degree. The conduction means जिस टाइम के लिए करंट फ्लो होगा, that is conduction. The conduction is 180 degree only. Now how we will achieve this condition that the amplifier must produce the output for positive half cycle और नेगेटिव हाफ साइकिल। हाउ वी विल अचीव दिस, ये है कैसे पॉसिबल है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से सिर्फ हाफ साइकिल में ही आउटपुट मिलेगा। यस, इट इज पॉसिबल बाय सेटिंग द क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट मीन द क्यूसेंट पॉइंट और द ऑपरेटिंग पॉइंट एट अ कट ऑफ और अ सैचुरेशन, कट ऑफ or saturation. So either of the condition can be used and we will get either positive half cycle or either negative half cycle by setting the Q point at one of the regions of the load line. So Q पॉइंट का पोजीशन लोड लाइन पे सेट करने के बाद, मींस हम उसको कट ऑफ पे सेट कर रहे हैं या फिर सैचुरेशन पे सेट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्यू पॉइंट
ट्रांस कंडक्टेंस कर्व पे या फिर AC लोड लाइन पे कहाँ रखना है. That will use a diagram of AC load line. Now here I have drawn the circuit diagram of class B power amplifier. If you notice the circuit diagram of class B power amplifier, you will observe that the circuit is exactly same as that of your class A power amplifier. The only difference is that in class B power amplifier, the operating point is located here, Q point, or the operating point is located at the cutoff region. So Q point on AC load line is located at cutoff region. So this is the AC load line and it is not located in the center, but it is located at the cutoff region. So this is the only difference. Circuit diagram is exactly same, only the Q point or the operating point of this power amplifier, class B power amplifier, is located either on the cutoff or it can be located in the saturation. If the Q point is located at cutoff, then we will get positive cycles, and if the Q point is located at saturation, then we will get negative cycles at the output. Means we will get only positive half cycles if Q point is located at cutoff. We will get only negative half cycles if Q point is located here at a saturation point. So this point is saturation point. Point S is the saturation point, and here this is Q point located at the cutoff point. तो यहाँ पे जो Q point है कट ऑफ रीजन में, यानी पॉइंट C और पॉइंट Q, C स्टैंड्स फॉर कट ऑफ, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट है या फिर Q पॉइंट है वो बिल्कुल कट ऑफ रीजन में लोकेट किया हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे. अगर यही Q पॉइंट हमारा सैचुरेशन रीजन में लोकेट होता है पॉइंट S में, तो हमें सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे. The working is same as that of the class A power amplifier. The output current flows. This is output voltage and this is output collector current. The output collector current flows only for half of the cycles. That is, the conduction takes place only at 180 degrees of the input cycle. So this is 0, this is pi or 180 degree, that is 2 pi, and this is 3 pi. So the conduction is taking place only for 180 degrees. This pi means 180 degree, 2 pi means 360 degree. So you won't find the negative half cycle just because the Q point located at the cutoff. So the very first point is that the Q point is located such that the current flows, this output collector current flows only for 1/2 of the input cycle, that is only for 180 degree. So the conduction is for 180 degrees only. So again we will revise the working. R1, R2 voltage divider networks. Output is obtained across the collector. RL is connected. RL is our load to the collector using the coupling capacitor. This is the emitter bypass capacitor, emitter resistor. So when input signal is given, when input AC is given, the whole of the base current is flowing. The base current is flowing only when we are providing the proper VCC and when the base to emitter junction is forward bias. So as soon as the base to emitter junction is forward bias, the base current is flowing along with the input signal, and hence we will obtain the output at point C, that is the collector terminal.
and the output will be the product of IC RC. And hence, whatever we are giving the input, we will obtain the output during the positive half cycles only. So this is a very short and simple working of the class B power amplifier. Here we are getting the amplified signal at the output, because this product ICRC is very large as compared to V in. ICRC means the voltage across the collector. Now the transistor dissipates no power when the input signal is 0. So I repeat once again that output is flowing only during the positive half cycles only, means the conduction angle is only 180 degrees. And second thing is that this transistor, which is a common emitter configuration, so this transistor dissipates no power when the input signal is 0. So when the input signal is 0, the transistor dissipates 0 power. No signal, no power. However, something happens when there is increase in the amplitude. So, but as the amplitude of the input signal, is increasing, means that during the positive half cycle, of course, the power dissipation also increase for this transistor. So this is very natural thing that as the input amplitude is increasing, the power dissipation is also increasing. But on the contrary to the class A amplifier, the transistor dissipates maximum with no input signal and minimum with the largest input signal. What happens in the class A? In class A power amplifier, 0 input, power dissipation is maximum. And if there is largest input, power dissipation is the minimum. So this is very much contrary. So क्लास ए पावर एम्पलीफायर में क्या हो रहा है कि अगर इनपुट 0 है तो पावर मैक्सिमम डिसिपेट हो रहा है, और इनपुट मैक्सिमम है तो पावर डिसिपेशन कम हो रहा है. बट क्लास बी पावर एम्पलीफायर में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, हो रहा है, वैसे वैसे हमारा पावर डिसिपेशन भी इंक्रीज हो रहा है. Hence we can say that the average current drawn by the class B power amplifier is comparatively smaller than the class A amplifier. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज करंट हमें जो आउटपुट में मिल रहा है क्लास बी एम्पलीफायर में, जब ये क्लास बी पावर एम्पलीफायर काम कर रहा है, मीन्स ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द एवरेज करंट ड्रॉन बाय द सर्किट इट्स मच स्मॉलर देन द क्लास ए एम्पलीफायर. So the conclusion is that as the average current drawn by the circuit is smaller, so the power dissipation by this circuit is also very less. And if the power dissipation is less, the efficiency of class B power amplifier is high. And using the transformer coupling the maximum value can be achieved as high as 78.5. But if we are not using the transformer coupling at this collector, the efficiency can be up to 50%. Now we will try to understand the Q point on the transconductance curve and the Q point on the AC load line. So this figure A, where I have written Q point on the transconductance curve.
Now let us see where is the Q point. So here it is Q point at this point. So Q point on a transconductance curve. So this is a transconductance curve. So this is a transconductance curve and the Q point is located near the cutoff. So from figure A, this whole two waveforms is figure A. Okay. The variations of the collector current, this is also collector current. So the variations of the collector current is shown in both the figures, this figure as well as this figure. Here also we can see the variations when the Q point is located on the transconductance curve. What is a transconductance curve? We will revise. Transconductance curve is a curve obtained when we plot VB versus IC. Transconductance. It is a plot of VBE versus IC. Input voltage versus output current. It is called as the transconductance curve. So the second figure shows the Q point on the AC load line. This is AC load line. From saturation to cutoff, we will draw one straight line. That line is called as the AC load line. So the variations of the collector current. So these are the variations of the collector current, and this is the output voltage. So the variations of the collector current with respect to the input signal. Now where is the input signal? This is the input signal. This complete sine wave is the input signal. So we can observe that if there is no input signal, the transistor is biased to cutoff. If no input signal, zero line, the transistor is biased to cutoff. So at this point there is no current flowing through the transistor, and hence if no current is flowing, then no power is dissipated. If no current is flowing, no power is dissipated. So when the input signal is applied, the transistor handles. So when we observe this. So when the input signal is applied, the transistor handles the average current, which increases it for large input signal. So as we are giving the input signal, we are obtaining the output. And as the input signal increases, the collector current also increases, and hence the power dissipation increases. If the signal is 0, no collector current is flowing, and hence we will not 0 or negative, then no current is flowing, and hence no power dissipation will take place. So once again I will repeat what both the figures explains. Both the figures explains that when there is no input signal means at 0, the transistor is biased to cutoff. No input signal or negative input signal, 0 or negative, this is 0 or negative input signal, the transistor is biased to cutoff. At this point no collector current is flowing, and during all the positive half cycles the collector current is flowing. So when there is no input signal, the transistor is biased to cutoff,
and when the transistor is biased to cut off, means the transistor is in off condition, and hence no collector current will flows, and hence no power dissipation will take place. And this is totally contrary to class A power amplifier. So as the signal is increasing, so we can say that input is increasing. As the input is increasing, collector current is also increasing, and power dissipation also increases. And if no input, no collector current and no power dissipation. So this is input, this is output. For negative or 0, we are getting 0 output. So here we observe that there is no output, no collector current and no voltage. Negative cycles, no negative cycles of current and voltages when the input is 0 or negative. So to summarize, क्लास बी पावर एम्पलीफायर एक ऐसा पावर एम्पलीफायर है जिसमें हमें आउटपुट सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स के लिए ही मिलेगा या फिर सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल्स के लिए ही मिलेगा. सो कंडक्शन एंगल होगा हमारा 180 डिग्रीज. मीन्स हमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव हाफ साइकिल्स ही मिलेंगे. सो ये दोनों डायग्राम्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? सो पहला डायग्राम है ट्रांसकंडक्टेंस कर्व. ट्रांसकंडक्टेंस कर्व क्या होता है? इट इज अ प्लॉट ऑफ इनपुट वोल्टेज. इनपुट वोल्टेज यानी वीबी वोल्टेज वर्सेस कलेक्टर करंट. कलेक्टर करंट आउटपुट होता है और इनपुट वीबी वोल्टेज होता है. तो ये जो प्लॉट है इसको हम कहेंगे ट्रांसकंडक्टेंस कर्व. तो इस ट्रांसकंडक्टेंस कर्व में हम लोग देख रहे हैं कि जो क्यू पॉइंट है एग्जैक्टली कट ऑफ रीजन में लोकेट किया हुआ है. तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है और इसके हिसाब से हमें आउटपुट में ये कलेक्टर करंट मिल रहा है. कलेक्टर करंट हमें तब मिल रहा है जब हमारा ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस हो रहा है. फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब इनपुट आएगा. जब इनपुट आएगा तभी हमारा ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा और तभी हमें आउटपुट में कलेक्टर करंट मिलेगा. अगर इनपुट कुछ भी नहीं है, मीन्स जीरो इनपुट है या फिर नेगेटिव आ रहा है, जीरो इनपुट या फिर नेगेटिव, तो हमें आउटपुट में कोई भी कलेक्टर करंट नहीं मिलेगा. नेगेटिव पे किस लिए नहीं मिलेगा? बिकॉज हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो रिवर्स बायस हो जाएगा, इसलिए आउटपुट में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. सेकेंड थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने एक लोड लाइन ड्रॉ करके बताया हुआ है कि इनपुट और आउटपुट कैसे होता है. सो ऑब्वियसली हमारा ये हमारा इनपुट सिग्नल है कंप्लीट साइन वेव. तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव जैसे जैसे हमारा इनपुट सिग्नल इंक्रीज हो रहा है तब हमारा कलेक्टर करंट भी हमें मिल रहा है और यहाँ पे हमें वोल्टेज भी मिल रहा है. ओके, जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया, मतलब जीरो के बाद जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया, फ्रॉम जीरो टू नेगेटिव जैसे ही आएगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर, वो रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी बेस टू एमिटर रिवर्स बायस हो जाएगा और हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा बिकॉज हमारा ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ हो गया है. और अगर ट्रांजिस्टर टर्न ऑफ हुआ है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, मीन्स हमें कुछ भी आउटपुट कलेक्टर करंट नहीं मिल रहा है, ना कि आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, तो हमारा जो पावर डिसिपेशन होगा वो अल्टीमेटली कम से कम या फिर जीरो होगा. तो इट्स सिंपल, जैसे इनपुट आया इंक्रीज हुआ, एज द इनपुट इज इंक्रीजिंग वी विल गेट द आउटपुट. एज द इनपुट इज जीरो, नो आउटपुट. सेम हियर, as the input is increasing, collector current is flowing and we are getting the output voltage also. As the input is zero or negative, we are not getting any of the output voltage, we are not getting any of the output current. So this gap indicates that there is no output when the input signal is zero or negative. So it is only possible because the Q point, जो Q point है, ये कट ऑफ रीजन पे हम लोगों ने लोकेट किया हुआ है. इसलिए अगर ये कट ऑफ पे लोकेट करते हैं तो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे. अगर सैचुरेशन पॉइंट पे लोकेट करेंगे तो
नेगेटिव हाफ साइकिल्स मिलेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास B पावर एम्पलीफायर ऑपरेशन.